Hello everyone. In the last topic, we have discussed about the basics of computer graphics, and I, Savita Singh, Assistant Professor, SOIT Department from IMS Noida, welcome you all in the new topic. Right. So, in last lecture, we have discussed what is computer graphics and what are the various types of computer graphics. Right. So we discussed about two types of computer graphics. One was interactive computer graphics, and another was non-interactive computer graphics. Right. So as we see that in interactive computer graphics, user has the control over the images. User has the control over the part that is going to be displayed by the graphic software. But when we talk about non-interactive computer graphics, user has no control over the images. Whatever titles are showing, whatever image is showing, he or she can only view the image. He cannot have the control over the images. Okay, so in this topic now we will discuss about the areas and applications where the computer graphics in today's era is used, right? So the major part product of computer graphics is a picture. In last lecture, we have discussed that computer graphics is basically the you can say it computer graphics is if we are doing something, if we are making an image, if we are moving, if we are drawing a picture, either with the help of either with the help of man manually we are doing with the help of computer we are making a picture, right? So this is the product of computer graphics. Main product is the picture, right? Main product is the image. With the help of computer graphics, picture can be represented in 2D and 3D space. Okay, so D is dimension. That means with the help of computer graphics we can make two-dimensional images as well as three-dimensional images, right? And what helps in storing these images, that is the buffer. Okay, so many applications, so various part of the displayed picture changing in the size and orientation. Okay, so apart from creating the pictures, we have another topic in computer graphics, that is the transformation of image, right? So first thing is कि अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं, राइट? हम लोग उसको एडिट करते हैं, ठीक? बट जब हम लोगों की बात आती है एडिट करने की, तो पिक्चर को एडिट करने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं? या तो आप उसका साइज चेंज कर रहे हो, आप उसके ओरिएंटेशन में चेंज कर रहे हो, आप उसको लार्ज कर रहे हो, आप उसको श्रिंक कर रहे हो, आप उसको रोटेट कर रहे हो. तो these all are part of transformation, and again transformation is one of the important part of your computer graphics, right? So first thing is, for me to drawing a image we use computer graphics. For transformation any image, either we have to grow it, we have to shrink the image, we have to rotate the image, we have to use the computer graphics. The third thing is clipping, right? Third thing is clipping. What is clipping? Like the display on them is often too big to be shown in their entirety. Thus, with the help of CG, a technique called clipping is used. Like if you are having a large image, that means if you are having the large image, but your screen is small. Okay, so this is what this is screen, right? But this is picture. Okay, so picture cannot completely came into the screen, right? So for this purpose in computer graphics we have the term that is known as clipping, right? So this is the third thing that we are going to discuss in computer graphics syllabus. That is, first thing is basics of computer, that how we can draw a line, how we can draw a circle, okay, how we can draw an oval, how we can draw a rectangle, right? So these are the images, these are the shapes, right? Second thing is, if we have to grow an image, if we want to shrink an image, that then topic comes transformation. And third is clipping, right? Now move on to next slide. CG is in daily use in the field of science, engineering, medicine, entertainment, advertising, the graphic art and fine art, business and education, etc. Right? So, in first class, I have already told you that whether you are students of PCA, whether you are students of MC or MTech, and you are doing engineering, you are in entertainment field,
Okay, all need computer graphics, right? In all places, computer graphics is there, animation is there. In the entertainment part, in the movie part, in the advertising part, you all see the graphics, right? Next thing is the electronic industry is more dependent on the technology provided by the CG. Okay, so in electronic industry, what we can do, the engineers with the help of computer graphics, the engineer can draw their circuit. Okay, so this is for electronic students, right? अगर हम लोग आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं, हम लोग डिजाइनर्स की बात करते हैं, तो द टर्म के कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ कैड, आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप बेशक आप सिविल इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, आपको लाइक आपको कोई बिल्डिंग का ड्रॉ करना है, आपको बिल्डिंग का एक नक्शा बनाना है, सो उसके लिए भी आपका क्या यूज होगा? कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होगा. देन अनदर फील्ड इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, उनको मॉलिक्यूल्स की पिक्चर बनानी होती है, उनको स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना होता है. लाइक हम लोग न्यूट्रॉन्स फोटॉन्स की बात करते हैं, इस तरीके से हम लोग कुछ ड्रॉ कुछ भी हम लोग कर रहे हैं. तो दैट मीन्स if you are the students of biology, right, then also there is a need of computer graphics, right? Next is the town planner and transportation engineer use the computer generated maps, right? So map is what? Map is graphic part, right? So even जो आपके engineers होते हैं, all types of engineers, whether you are belong to civil engineering or you are belongs to mechanical engineering, or you are students of computer science, in all engineering we are using the graphics, right? We are using the images, we have to make the designing, we have to make the you can say we have to make the models, right? So in all places computer graphics is there. Next, now we will discuss about the major areas where computer graphics in today's era is used. First is modeling. Okay, first is modeling. So modeling basically deals with mathematical specification of the shapes, right? Whatever shapes, whatever image appearance is showing by the computer, that is the modeling, right? So in mathematical shapes जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, हम लोगों को एक मॉडल बनाना है, लाइक हम लोगों को एक इमेज बनानी है, लाइक जैसे मान लीजिए लेट्स से हम लोगों को इस तरीके से हमने कोई इमेज ड्रॉ की, राइट? इस तरीके से हमने कोई ग्राफिक्स में इफ वी आर डूइंग समथिंग, राइट? So this is one kind of image that we have made, right? So for this purpose also we have used the mathematical shapes, like we are using two circles here, we are using the lines here. Okay, so modeling deals with the mathematical specification of shapes, and that shapes are used in the for making the computer graphics interactive one, right? Next is rendering. Okay, so it is the term inherent from the art and dealing with the creation of shaded images, right? So rendering is if we have an image and we are creating the shaded image of that particular image, then this process is called as rendering, right? So this is the term inherent from the art, and it also deals with 3D computer model. So definitely it is again a graphic area part in which these terms are basically used in graphics, right? So you have to remember these terms as modeling, rendering, transformation, clipping. These all are very important part. Next is animation. I think most interesting topic in computer graphics is animation. Okay, so if we are creating an illusion of something, is known as animation, राइट? हम लोग एनिमेशन किसका यूज करता है? अभी हम लोगों ने बात की कि मॉडलिंग और रेंडरिंग, ये दो टर्म ऐसी हैं जो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज की जाती है, राइट? सो एनिमेशन आपका किसकी हेल्प से बनता है? मॉडलिंग एंड रेंडरिंग की हेल्प से बनता है. आप एनिमेशन जो बनाते हो वो मॉडलिंग यूज करता है, रेंडरिंग यूज करता है आपका आपकी इमेजेस को मूव कराने के लिए. Okay, so animation is a technique to create an illusion of motion, right? Please
keep this thing in mind, that is illusion of motion. That means picture is not actually moving, but it create an illusion that our picture is moving, right? So how we will create it, I just take an example, like अगर आपको कोई बॉल आप मूव कराना चाह रहे हो, राइट? सो बॉल मूव कराने के लिए आप क्या करोगे? आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप उसको जंप नहीं करा सकते हैं हम, तो वी हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट इट इज मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन, दिस इज एनिमेशन, राइट? सो हम कैसे करेंगे उसे? हम लोग क्या करेंगे, लाइक हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने इधर सर्कल ड्रॉ किया, हम लोगों ने इधर सर्कल ड्रॉ किया, राइट? और इन सर्कल्स को रिमूव करते चले जाओ, राइट? सो ये क्या फील देगा आपको कि लाइक अगर हमारी बॉल जो है वो अप डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इट इज द इल्यूजन ऑफ मोशन दैट वी विल क्रिएट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट? Next is, there are many other areas that involve computer graphics, user interaction. For interacting to each other, we use computer graphics. Like if we want to teach the mathematics students, right? So it is not possible कि हम लोग एक slides पे उतना compatible नहीं होता है कि हम लोग पढ़ा सकें बच्चों को. Then we can use the tablets, okay? And with the help of tablet, आप कंप्यूटर से उसे अटैच कीजिए, उस पर लिखिए, एंड इट goes to student as you are writing in whiteboard, right? So for user interaction also we need the computer graphics. Next is virtual reality. Okay, so virtual reality is, in the last class we talk about flight simulation, right? We talk about flight simulation. That means the thing which is not really exist in real, but it looks like virtual. Okay, so virtual reality is again very important area in which computer graphics is used. So in virtual reality attempts to immerse the user into the 3D virtual world, right? So it seems like we are in real world, we are in real, we are doing the we are हम flight को उड़ा रहे हैं, right? So this typically require at least stereo graphics and response to the head motion. So head motion should be there. Like if you have some types of games, so आपने देखा होगा कि we have the stick over there. With the help of stick we have the motions. Okay, even जो हम लोग गेम्स आपने देखा होगा कि जो हमारी एक ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल के थ्रू हम मूव कराते हैं, या फिर कोई स्टिक होती है जिसके थ्रू हम अपनी कार को मूव करा रहे हैं, रेस गेम में हम लोग उसे यूज कर रहे हैं. ओके, सो स्टीरियो ग्राफिक्स होना चाहिए, साउंड शुड बी देयर, कोड शुड बी देयर, आपका ब्रेक सिस्टम होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हो, राइट? सो वर्चुअल रियलिटी इज नथिंग बट द environment which looks like real. Okay, next is visualization. Visualization attempts to give user insight into complex information via visual display, right? So if something is like, if we have very complex structure of anything, right? So which is not possible कि आप उसको manually आप draw करो, और या फिर आप कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसको बेशक आप वर्ड यूज करो या फिर कुछ ग्राफिक्स में आप फोटोशॉप यूज करो, राइट? सो अगर आप वो उतना, अगर आपके लिए उतना इजी नहीं है, तो विजुअलाइजेशन वहाँ पे हेल्प करता है हमें, कि हम लोग जैसे मैप्स हैं या कोई कॉम्प्लेक्स चीजों को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करते हैं. देन इज इमेज प्रोसेसिंग. इमेज प्रोसेस करने के लिए आपको 2D इमेज प्रोसेस करनी है, 3D इमेज प्रोसेस करनी है, आपको 4D 5D, तो इवन वी आर वर्किंग ऑन 5D ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक्स एंड विजन, राइट? वी हैव द 3D टाइप्स ऑफ वॉलपेपर्स, वी हैव द 3D टाइप्स ऑफ 3D 4D 5D टाइप्स ऑफ वॉलपेपर्स, आपके कैलेंडर्स हम लोगों के पास में होते हैं, जिसमें हमें इमेजेस थोड़ी उभरी हुई दिखती हैं, राइट? सो इमेज प्रोसेसिंग के लिए अगेन हम कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करते हैं. देन देयर इज 3D स्कैनिंग, राइट? स्कैनिंग करने के लिए, हमारे 3D मॉडलिंग को स्कैनिंग करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, हमारी लाइक हम लोगों ने कोई भी चीज हम लोग यूज करते हैं, ओके, स्कैनिंग का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 3D स्कैनिंग हो जाती है. नेक्स्ट, कंप्यूटेशन फोटोग्राफी. आपको फोटोग्राफी आपको फोटोग्राफ्स आपको बनाने हैं, राइट? कंप्यूटेशन फोटोग्राफी आपको करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करेंगे. Then now we will generalize the applications of computer graphics. First is computer aided design, that is CAD, and we have used these terms many times, right? Then we have
Presentation graphics is for giving the presentations, computer art, entertainment, education, visualization, image processing, right? So we use these types of applications in computer graphics. So one by one we will discuss these terms. First is कंप्यूटर डिजाइन. तो एज यू सी ये आपका एक प्लेन दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको पूरा सब कुछ चीजें नजर आ रही है, राइट? सो फॉर डिजाइन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, स्पेस क्राफ्ट, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल्स, राइट, इन सब के लिए हम लोग किसके हेल्प से बनाते हैं? हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन से बनाते हैं. एंड इट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर कंप्यूटर ग्राफिक्स. Second is presentation graphics, that is used to produce illusion for reports or generate slides for use with projector. Okay, so as we teach in class, like हम लोग प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं और हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपको एक व्हाइट बोर्ड पे या आपको वॉल पे दिख रही है, तो दैट मीन्स उसका प्रोजेक्शन होता है जो सबको विजुअलाइज होता है, राइट? सो दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, राइट? सो फाइनेंशियल पर्पज से, स्टैटिस्टिकल पर्पज से हम लोग को कोई रिपोर्ट बोलनी है, हमको चार्ट बनाने हैं, ग्राफिक चार्ट बनाना है, सरफेस चार्ट, आई थिंक आप एक्सेल में आप बना सकते हो, राइट? हम लोग जब बार चार्ट की बात करते हैं तो वो इस तरीके से बन जाता है, राइट? जब हम बार चार्ट इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं बार चार्ट, राइट? ऐसे ही लाइन ग्राफ की हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से लाइन ग्राफ हो जाता है, राइट? हम लोग पाई चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट आपका कैसे हो जाता है? इस तरीके से हम लोग पाई चार्ट की बात करते हैं. तो जब हम चार्ट्स बनाएंगे तो भी वो भी हमारे किसके पार्ट हो जाते हैं? ग्राफिक्स के पार्ट हो जाते हैं. देन कंप्यूटर आर्ट, आई थिंक फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट के बारे में सबने सुना होगा कि फाइन आर्ट होती है जो हमारे जर्नलिज्म के बच्चे यूज करते हैं, या उनको कोई कमर्शियल पर्पज से उनको यूज करना है, आपको कार्टून ड्रॉ बनाने हैं, लोगो बनाने हैं, राइट? कोई भी कंपनी है अपना कार्टून, अपना कमर्शियल पर्पज से अगर वो कोई एनिमेटेड मूवी बना रही है तो उसको कार्टून का बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स उसको कार्टून की ड्राइंग करनी पड़ेगी, तो कंप्यूटर आर्ट का यूज करेगा, वो पेंटिंग करनी है, राइट? एडवर्टीजमेंट करना है तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनिमेशन का यूज होगा ही होगा, राइट? सो कंप्यूटर आर्ट के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है? कार्टून ड्राइंग, पेंटिंग, लोगो डिजाइन, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं. देन एंटरटेनमेंट, आई थिंक मूवीज सबको पसंद होती हैं. मूवीज के लिए उसमें आपने डोरेमोन, एंग्री बर्ड, राइट, टॉम एंड जेरी, तो ये सारी चीजें लाइक टाइटैनिक हम देखते हैं मूवीज में यूज होता है, या आपने देखा होगा कि ये दिस इज द पिक्चर ऑफ, या फिर आपने स्पाइडरमैन टाइप की मूवीज या इस तरीके की मूवीज जिसमें एनिमेशन बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, राइट? सो entertainment is again the area where computer graphics is widely used, right? नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इन ट्रेनिंग इज ऑफ एनी टाइप, राइट? एजुकेशन करने के लिए आप प्रेजेंटेशन हम लोग चलाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, ओके? हम लोग 2D 3D आपने देखा होगा बनाया जाता है, कलर्ड कोडेड डायग्राम बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है. उन सब पर्पसेस के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करते हैं. देन विजुअलाइजेशन, दैट टर्म्स हम लोगों ने पहले भी वो आपकी कवर की थी, दैट इज साइंटिफिक विजुअलाइजेशन. Okay, that is produce graphical representation for scientific engineers and medical data set, right? So visualization is कि हम complex structure को, like in this image आप देख रहे हैं कि ये आपका एक साइंटिस्ट है जो इस ग्लास की हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स इमेज को देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, राइट? उसको बहुत बारीकी से देख रहा है वो, तो दिस इज द साइंटिफिक विजुअलाइजेशन. देन इमेज प्रोसेसिंग, आपकी पिक्चर क्रिएट करने के लिए, मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, सिमुलेशन के लिए, राइट, अल्ट्रासोनिक मेडिसिन स्कैनर के लिए, ओके? आपका क्या यूज होता है? आपका रोबोटिक्स में आप देखो, रोबोट जो बनाए जाते हैं उनकी उनकी जो पिक्चर पहले बनाई जाती है, फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं. इमेज प्रोसेसिंग अगेन कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है. देन जीयूआई, डेफिनेटली सी बात है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप विंडो, आई थिंक विंडो हर कोई यूज कर रहा है, आइकन्स, फोल्डर, इमेज, ओके, स्मॉल, तो वो आइकन विंडो में आपको दिखता है, भाई फोल्डर आपको दिख गया इस तरीके से बना हुआ है, राइट? आपको आपको लोगो दिख गया इस तरीके से, हमने कोई लोगो डिजाइन किया हुआ है, राइट? सो दिस इज पार्ट ऑफ GUI बेस्ड इंटरफेस, राइट? तो वो जो GUI बेस्ड इंटरफेस होता है, मल्टीपल विंडोज ओपन करते हैं, वो किसका पार्ट हो जाता है? हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट हो जाता है.
So that was all about today's topic, right? So in which we have discussed the various types of applications, right? these types of applications जहाँ हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है. हमने बात की कंप्यूटर डिजाइन की, प्रेजेंटेशन की, आर्ट की, एंटरटेनमेंट की, राइट? सो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एरिया, इवन प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने एरिया की बात की, राइट? सो कोई भी एरिया, कोई भी आपका बेशक आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आप मेडिकल से बिलोंग करते हैं, है ना, या आप सिविल से बिलोंग करते हैं, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स की नीड नहीं है, राइट? सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक कि आपको लोगों को ये समझ में आया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? या कंप्यूटर ग्राफिक्स हमें क्यों पढ़ाया जाता है, राइट? So we have in the next slides, yeah, in the next presentations, we will cover the topic like raster scan, random scan, line drawing algorithm, आपका ब्रश एंड एम्स हो गया या सर्कल के ड्राइंग एल्गोरिथम्स हो गए. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में रोल प्ले करते हैं. क्लिपिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, राइट? सो होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच.